Hello and welcome back to Chemistry with Umar Farooq Khan. Our next topic is melting and boiling points. Melting and boiling points of period 3 elements. The period 3 elements include sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. Let's discuss the melting points first. Melting points. As I've mentioned earlier, sodium, magnesium and aluminium. These three are metals. There's a special type of bonding present in them which is known as metallic bond. In the previous video, I've already discussed what a metallic bond is. If you guys haven't seen the previous videos yet, I'll suggest you guys to watch them first and then carry on with this lecture. What's a metallic bond? A metallic bond is the force of attraction between positive ions which are also called cations and a sea of delocalized electrons. सही है? तो ये हमारे पास मेटालिक बॉन्ड है, कैटायंस होते हैं हमारे पास and cations के around present होता है sea of delocalized electrons. Delocalized electrons are the electrons which are not bounded by a nucleus. They are free to move throughout the metal. अच्छा, उसके बाद these delocalized electrons are also called free electrons. सही है? These are free electrons or conduction electrons because they conduct electricity or heat. Conduction electrons. अच्छा, तो sodium, magnesium and aluminium are metals. इनमें क्या होता है? metallic bond होता है. Metallic bond is a strong bond and so a lot of energy is needed to break a metallic bond. इसलिए sodium, magnesium and aluminium have very high melting points. सही है? इनके melting points ज़्यादा है. A lot of energy is needed to break these bonds. अच्छा, as I've mentioned earlier, sodium has 11 electrons. It donates one electron to the sea of delocalized electrons, whereas magnesium donates 2, whereas aluminium donates 3 electrons to the sea of delocalized electrons. So if we talk about sodium, magnesium and aluminium, so sodium has 1 free electron, whereas magnesium has 2 free electrons and aluminium has 3 free electrons. So the strength of a metallic bond depends directly on the number of free electrons. जितने ज़्यादा हमारे पास free electrons ज़्यादा होंगे उतना हमारे पास metallic bond will be stronger and higher will be the melting point. So magnesium has 3 free electrons, तो इसलिए the highest melting point किसका होगा? Aluminium का होगा. उसके बाद we have magnesium and then we have sodium. Sodium has the lowest melting point out of the 3. उसके बाद we have, let's talk about silicon. Silicon का ये है कि silicon has a giant macromolecular structure. सही है? Macromolecular structure. A lot of silicon atoms combine together to form a large macromolecular structure. सही है? So because of its giant macromolecular structure, silicon has the highest melting point in period 3. सही है?
सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन हैज अ जाइंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर और उसमें अ लॉट ऑफ सिलिकॉन एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज जाइंट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, तो इसलिए सिलिकॉन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड आल्सो बॉइलिंग पॉइंट इन पीरियड 3. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट थर्ड ग्रुप विच इज फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन. ये चार जो है ना, तो दीज आर सिंपल मॉलिक्यूल्स. सही है, दीज आर सिंपल मॉलिक्यूल्स. आई ऑल्सो एक्सप्लेन दिस इन चैप्टर नंबर, वो जो लिक्विड्स का जो चैप्टर है ऑफ लिक्विड का जो चैप्टर है ऑफ फर्स्ट ईयर, उसमें आई टॉक अबाउट दिस. बट एक हमारे पास होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. सही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. सही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. सही है, फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. तो मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्सेस होती है, दे आर कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अच्छा, तो अभी हमारे पास फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन, दीज आर ऑल मॉलिक्यूल्स. सही है, दीज आर ऑल मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता है कि फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, सही है, फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल है, इट्स मेड अप ऑफ 4 फॉस्फोरस एटम. अ फॉस्फोरस molecule is made up of 4 phosphorus atoms. सही है, whereas a sulfur molecule is made up of 8 sulfur atoms. सही है, तो हम phosphorus के लिए we write P4, for sulfur we write S8, whereas chlorine molecule is made up of 2 chlorine. It is diatomic. सही है, its molecule is made up of 2 chlorine atoms, whereas argon is monoatomic. सही है, monoatomic. अच्छा, तो हमारे पास देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कॉल्ड वंडर वाल्स फोर्सेस. वंडर वाल्स फोर्सेस. सही है, तो वंडर वाल फोर्सेस का ये होता है कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिसिटी. सही है, एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स. तो अभी जितने ज्यादा हमारे पास एटम्स होंगे उतने हमारे साथ ज्यादा वंडर वाल फोर्सेस होंगे. एंड वंडर वाल्स फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट. जितना हमारे पास वंडर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे उतने हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. अच्छा, तो नाउ वी हैव P4, S8, Cl2 and argon. तो अभी phosphorus molecule is made up of 4 phosphorus atoms, whereas S8 sulfur molecule is made up of 8 sulfur atoms. Chlorine is diatomic molecule and made up of 2 chlorine atoms, whereas argon is monoatomic. तो अभी हमारे पास सबसे ज्यादा वंडर वाल फोर्सेस किस में होंगे? S8 में सबसे ज्यादा होंगे. देन हमारे पास वंडर वाल फोर्सेस P4 में होंगे, फिर Cl2 में होंगे, एंड लास्टली वील हैव आर्गॉन. तो इसलिए हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट विल बी ऑफ सल्फर. सही है, सल्फर का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा. उसके बाद वील हैव P4, उसके बाद वील हैव Cl2 एंड लास्टली वील हैव आर्गॉन. तो मेल्टिंग पॉइंट ये सब हमारे पास क्या है? दीज आर ऑल मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स में हमारे पास सल्फर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 8 सल्फर एटम्स. phosphorus molecule is made up of 4 phosphorus atoms. सही है. Chlorine is made up of 2 chlorine atoms, whereas argon is made up of, argon is monoatomic, उसमें सिर्फ एक ही एटम है. तो हमारे पास जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतने हमारे पास ज्यादा वंडर वाल फोर्सेस होंगे, एंड मोर वंडर वाल फोर्सेस विल रिजल्ट इन अ हायर मेल्टिंग पॉइंट. सही है. तो more number of atoms, higher will be wonder walls forces, and so more melting point. अच्छा, अभी बॉइलिंग पॉइंट का भी हमारे पास सिमिलरली वो है. सही है, मगर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, उसमें सबसे ज्यादा सोडियम, सबसे कम सोडियम, देन वी हैव मैग्नीशियम, देन वी हैव एल्यूमिनियम. इसमें सिर्फ ये है कि एल्यूमिनियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट्स मोर एज कम्पेयर टू सिलिकॉन. इसके अलावा सेम ही हमारे पास ट्रेंड है. बस सिर्फ आप ये याद रखें कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन सिलिकॉन. With this, the physical and atomic properties of period 3 elements come to an end. Inshallah, in the next chapter, in the next video, we'll talk about chemical reactions of period 3 elements. इसके साथ, I'll be extremely thankful if you guys can please like and subscribe, and also comment and share this video with everyone. Thank you so much. Means a lot. Bye.